There is a funny incident I must tell you. My first customer was Purab Kohli और The एक actor lady Purab थी, Kohli. the actor Purab Kohli. वही time पे there was one more lady who bought my hair oil. Very next weekend I was just waiting for customer. वो भाग भाग के मेरे तरफ आ रही है ना. I was so scared कि मैंने कुछ तो गलत किया है, मुझे अच्छे से मार पड़ने वाली. So now coming back to your Shark Tank special brand, the brand Mom's Therapy that Right. got aired on Shark Tank was loved by millions of customers, was loved by the shark. You got a lot of feedback. Right. A little bit more about the brand. You have naturally so beautiful hair. Thank you. Anybody who's watching, who's losing hair, just like me, should look at Mom's Therapy brand because I mean, look at her black, luscious, thick hair, right? ये case Kamla नहीं है. This is Mom's Therapy. Absolutely. This is Mom's Therapy. So a little bit Absolutely. more about why the name Mom's Therapy? Right. ये आइडिया कहाँ से आया? आइडिया खुद से ही आया. जितनी बार मैं जाती थी गुजरात बॉम्बे शिफ्ट होने के बाद, तो एवरी टाइम आई यूज टू गो देयर और वहाँ से मम्मी को बोलती थी मम्मी ऑयल बना रही है तो मेरा एक बॉटल भर के रख लेना, और फिर वो मैं लेके आती थी बॉम्बे में. फिर ये हुआ कि यू नो समटाइम्स व्हेन यू आर ट्रैवलिंग बाय एयर दे डोंट अलाउ यू टू गेट द ऑयल और समथिंग या लाइक लिक्विड दैट. नहीं लेके आ सकते आप. लिक्विड नहीं लेके आ सकते हैं. तो बहुत टाइम ऐसा हुआ कि वो छोड़ के आना पड़ा, फिर रोते रोते आना पड़ा. फिर यहाँ पे और कुछ यूज़ कर लिया, इतना मेरे को ये कुछ डिफरेंस नहीं लगा, या वो जो रीज़न से मैं यूज़ कर रही थी I never got that result also. So then one fine day I just called up my mom. Mom, I'm losing my hair, do something. And she was like, "ठीक है, I'm giving you the list of ingredients. You go to the market and you get everything." I was like, ठीक है. And at that point of time, I used to sit at Masjid Bandar in my husband's office. और वहाँ से पूरा market तो नज़दीक हो जाता है. So I went to the market all with Antuda. अच्छा मैं मेरा खुद का oil बनाने वाली हूँ and all that. Went to the market. The first main ingredient was black sesame oil. सो कहीं पे भी जाती है, भैया काले तिल का तेल दे दो. मैडम काला या सफ़ेद पता नहीं है, तिल का तेल है. सो आई वाज लाइक ठीक है. वापस कॉल किया, मम्मी पता नहीं है क्या है. बोला कोई नहीं, तू ले तो ले, तू बना तो ले. कैसे कैसे करके बनाया, किया, रिजल्ट दिया, बट वो जितना हो सकता है वैसे नहीं दिया. एंड दैट्स हाउ आई बिलीव द जर्नी स्टार्टेड, यू नो. देन एवरी टाइम आई यूज टू, देन आई स्टार्टेड ट्रैवलिंग इन ट्रेन, सो दैट इन ट्रेन आई कैन कैरी माई हेयर ऑयल, और इन ट्रेन आई कैन कैरी द इंग्रेडिएंट आई वॉन्ट. या बीइंग अ फार्मर्स डॉटर, मेरे फादर ने हम सब चारों भाई बहन को एक छोटे छोटे फार्म दे दिए. अच्छा. सो देन आई कॉल्ड अप माय फादर, पापा मेरा जो फार्म है वो खाली है. हाँ खाली है, क्या करना है. मैंने बोला मेरी जितनी भी जड़ी बूटी है वो मुझे वहाँ पे उगानी है. तो बोला ठीक है, एक बंदा दे देता हूँ, तू तेरा खेती कर ले, उसका पगार तू देखेगी. मैंने बोला कोई बात नहीं. सो ऐसे करके आइडिया आया कि मुझे हर एक चीज़ प्योर चाहिए, हर एक चीज़ मेरे को नेचुरल नेचुरल चाहिए. चाहिए. I started making it just for me, myself, my in-laws, my friends, family, and that's how I started. And then my parlor wali used to come and she's like, "भाभी मेरे भी बहुत बाल झड़ रहे हैं, आप कुछ बता दो." So that's how I started giving her 1 bottle, 2 bottle. She liked it. She got very good result. And then she started asking for her customer. And then she was like, मैं ऐसे तो नहीं लेके जा सकती हूँ. अगर उनको repeat order देना है तो you start asking something. So मेरी पार्लर वाली ने बोला कि you start you know taking some money out of it. मैं, चलो ठीक है ठीक है. 150 रुपये से शुरू किया था ये छोटा सा बॉटल, 50-100 ml or something. And I never thought this, because Could I'm become a not business. coming from business background, neither coming from any business school, you know. So I had zero knowledge how to do a business. या तो जैसे तैसे करके शुरू किया. देन समवेयर अराउंड 2016 वाज द टाइम जब मेरे हस्बैंड एंड ऑल दैट दे केम आउट ऑफ द इंसॉल्वेंसीज, कंपनी केम आउट ऑफ द लिक्विडेशन, एंड दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड नाउ इट इज माय टाइम, आई वांट टू डू समथिंग ऑफ माय ओन. राइट. Then I made a company and then we started with Mom's Therapy. Coming back to the name, the very main question, when you know this was also one of the question in Shark Shark Tank, Tank. that Mr. A.G. Mittal, Anupam Mittal also asked me why it is Mom's Therapy. It is only for the moms, and I was like, no, it is Mom's Therapy because my hero product is my hair oil, and the recipe of my hero product, It's my from your hair, mom. that is from my mom, and from to my mom it is from her mom. So I really wanted to give a gift to my mom, a tribute to my mom, and she wanted to give it to her mom. And then I said, okay, this is Mom's Therapy. So now Mom's Therapy is a national brand, a tribute to all moms who are making healthy oils and kadas and jadi booties and Everything, feeding their everything. kids and all of that, you know. Yes, yes. Good skin, good hair. Yes. So ये सब actually तो घर से ही शुरू हुआ है, right? Yes, yes, Now yes. we have started using chemical compositions, labs, formulators, manufacturing units, True. R&D and all of that. But I think back then it was things were much simpler. ऐसे ही जड़ी
बूटी निकाल के, I mean, you used to heat the oil, and the Correct. leftover oil used to be used for the skin and hair. Correct. The previous generation has the best hair, right? Very true, And very this true. generation, I mean, I am 28 and I'm losing hair like crazy, right? I need a transplant almost, but I'm a customer. I'm a customer. Looking at your hair, I'm sold. I think mom's therapy is for everybody that is facing any kind of hair issues. True, true. Just dandruff and, and how important is, let's talk about hair. Yeah. How important is hair in a girl's look, right? Absolutely. Without Yeah. crown, yeah. So I always tell my customer who come forward and like इसमें ये है वो है फला. I'm like very simple. You do any makeup, you wear any good clothes without having a hair. How is it going to look on you? Yeah. So think about your hair Yeah. and think about the beauty you are carrying with yourself. Yeah, that is the most natural, beautiful thing. Absolutely. I mean, if you work on your hair, I think looks are supposed to be great, Yes, right? yes. If somebody wants to start an Ayurveda brand, what is it that they need to start a brand in holistic wellness? अगर वो Ayurveda हो या फिर कोई भी natural product हो, what is it? Do you need a certificate? Do you need some courses, some certifications to start this brand? या आप खुद घर से अपना business start कर सकते हैं? मैंने तो घर से ही शुरू किया था बट ऑफ कोर्स आई एम कमिंग फ्रॉम अ फैमिली जहाँ पे आयुर्वेदा भर भर के हैं. अच्छा. मेरी जो मदर साइड ऑफ फैमिली में आयुर्वेदिक डॉक्टर्स थे तो उन लोगों ने कोई रेसिपीज जो है वो फॉरवर्ड करके दी, उन लोगों ने खुद लिखी हुई है. देयर इज अ वन बुक आई ऑलवेज टॉक अबाउट विच इज़ आर्यभिषक. अच्छा. जी मारी मम्मी ने एनी मम्मी આપે લી હતી. સો મારી નાની એ મારી મમ્મીને આર્યભિષક કરીને એક બહુ જ 100 વર્ષ જૂની એક બુક આપેલી. And with that book I think there were a lot of things about Ayurveda, about your day to day routine, and a lot of things were there that helped me, frankly speaking. But if you are doing some sort of a course that will again help you, so it's always plus plus. Yeah. તો અમારી ગુજરાતીમાં એક કહાવત છે, કોઈ પણ મીઠું બનાવો છો એટલું જેટલું ગોળ નાખશો એટલું વધારે મીઠું બનશે. સો ઇટ્સ લાइक जितना आप और मीठा डालोगे उतना वो और ज़्यादा मीठा बनेगा आपका Right, जो रसोई है. right, सो इट्स right. सेम वे. या Okay. So, coming back to anybody that's watching that wants to start a holistic wellness brand, तो पहली चीज़ उनके पास उनके प्रोडक्ट की रेसिपी होनी चाहिए. Absolutely. चाहे वो उनकी मम्मी से आए या फिर गूगल से आए या फिर उनकी रिसर्च से आए. Correct. तो पहले यू हैव टू हैव अ रेसिपी. Right. सेकंड, या तो आप उसको घर में डेवलप कर सकते हैं या तो यू कैन गो टू एन FDA सर्टिफाइड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट. राइट राइट. अब प्रोडक्ट की आइडिया आ गई, प्रोडक्ट हमने बना लिया. Correct. थर्ड चीज़ क्या है जो एक इंसान को करनी चाहिए टू लॉन्च द प्रोडक्ट? To launch the product, when you want to get into the market, then definitely you have to have FDA approval, which is compulsory. So Right. उससे आप सेफ हो जाते हो एज अ सेलर, बिकॉज क्या होता है कि उसमें थोड़े टेस्टिंग वगैरह जो और checks रहते हैं. हैं, Right. चेक्स हैं, तो वो हो जाते हैं. दैट मीन्स यू आर सेफ, Right. योर प्रोडक्ट्स आर सेफ टू Safe गो for अहेड, use. इट इज सेफ टू यूज. तो वो एज अ सेलर आपकी एक सेफ्टी बन जाती है एंड देन यू मूव फॉरवर्ड इन द मार्केट. सो दिस इज हाउ यू शुड So डू. what is the strategy with products like this? Is it a, क्या आप पहले खुद बेचना शुरू करेंगे डायरेक्ट टू कंज्यूमर या आप एक मार्केट प्लेस के पास जाएंगे? देखो मैंने ऑलवेज बोला है कि मेरे पास तो बिजनेस बैकग्राउंड था था नहीं, ही तो नहीं. मैं एक साथ हर एक जगह पे फैल गई थी जो अच्छा. मुझे हेल्प करता है. Right. सो जैसे नायका में मैं थी इन द इनिशियल टाइम व्हेन आई वाज डूइंग इट समथिंग फ्रॉम होम. सो व्हेन नायका वर जस्ट, आई थिंक दे वर नॉट इवन प्लानिंग टू कम फॉरवर्ड विद द IPO एंड ऑल दैट. तो वो टाइम पे इट्स सो गुड एंड द ब्रांड्स लाइक मी हु गॉट, उनको बोलते हैं उनको अपलिफ्ट किया गया. Right. कि हम लोग घर से बनाते थे तो भी हम लोगों को लिया था उन लोगों ने. Yeah. So yeah, that's So how I platforms started. like Nykaa have Yeah. given smaller brands like yours a Yeah. lot of boost, wherein they allowed and gave a platform, an e-commerce platform. Right. बेचने के लिए उनको, कि जो established brand नहीं है उन पे भी नायका ने ट्रस्ट दिखाया. That Absolutely. they provided those products on their platform. So I mean, kudos to startups like this in the Indian ecosystem. Absolutely. That are building and picking up more and more entrepreneurs from houses. You know what I Yeah, mean? yeah. एक ब्रांड को जब आप लेके आते हो अपने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे तो आपके पास उस ब्रांड का सेल्स और क्रेडिबिलिटी आता है. Absolutely. बट जब आप एक अननोन ब्रांड को अपने प्लेटफॉर्म पे लेके आते हो तो आपके पास सिर्फ ट्रस्ट होता है. मी एज अ वेंडर एंड यू एज अ सेलर, वी ओनली हैव ट्रस्ट बिटवीन ईच अदर. there's no guarantee of sales, there's no guarantee of anything, you know. Right. So I mean, yeah, like I said, the Indian startup ecosystem claps to our people in the industry that have joined hands with smaller and younger entrepreneurs and tried to Absolutely. pick the whole industry up, right? I would always say in my each and every interview, I've always mentioned Nykaa and Kavita Mukhi. Kavita Mukhi is the one with whom I started my who does farmers market. Okay. तो जहाँ पे वो बोलते हैं ना आपको एक वैलिडेशन चाहिए. Yeah. तो उन्होंने मेरी प्रोडक्ट को वैलिडेशन दिया, वहाँ से
So there is every Saturday and Sunday there is a farmers market, कविता मुखी का ऑर्गेनिक फार्मर्स मार्केट जो होता है, और वहाँ पे वही सेट ऑफ फैमिली और पीपल विल सी यू एवरी सैटरडे संडे. अच्छा. सो अगर आज कोई लेके गया है, सो देयर इज अ फनी इंसिडेंट आई मस्ट टेल यू. माय फर्स्ट कस्टमर वाज पूरब कोहली. ओके. वो हेयर ऑयल लेके गए, ये वो वही टाइम पे और The एक actor लेडी Purab थी, Kohli. द एक्टर पूरब कोहली. वही टाइम पे देयर वाज वन मोर लेडी हु बॉट माय हेयर ऑयल. वेरी नेक्स्ट वीकेंड आई वाज जस्ट वेटिंग फॉर कस्टमर, वो भाग भाग के मेरे तरफ आ रही है ना. आई वाज सो स्कैर्ड कि मैंने कुछ तो गलत किया है, मुझे अच्छे से मार पड़ने वाली, बिकॉज वो आप में एक डर रहता है ना. Yeah. एंड देन शी वाज लाइक, there's some magic in your hair oil, I'm loving it, मुझे 3 बॉटल दे दो, मुझे इंदौर भेजना है ये ना. एंड देन आई वाज लाइक ओके, माय प्रोडक्ट आर डूइंग गुड, माय Yeah. प्रोडक्ट्स आर प्योर. सो जब प्रोडक्ट आपके ऊपर काम करता है, बिकॉज यू आर यूजिंग इट सिंस योर चाइल्डहुड, तो आप उसको क्वेश्चन नहीं करोगे, बट वो दूसरे को क्या रिजल्ट देगा मुझे नहीं पता है. Right, सो दैट्स व्हेन यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग. Coming back to Nykaa, at that point of a time, Nykaa used to buy my products in a bulk. तो मेरे पास तो कस्टमर डाटाबेस था ही नहीं, तो आई वॉज यूजिंग नाइका फॉर दैट. Yeah, yeah. And for that I'm very grateful for Nykaa. Seeing me on Nykaa, I must mention this, seeing me on Nykaa, और वो टाइम पे आई वॉज द फर्स्ट वन हु, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हु क्रिएटेड दिस प्रोडक्ट विच इज़ एन आईब्रो ग्रोथ ऑयल, Okay. जो वो टाइम पे नहीं था. अच्छा. मुझे नायका पे देख के, मेरे वो जो फीडबैक्स वगैरह देख के, मुझे एट वन टाइम आई गॉट 26,000 पीसीस का ऑर्डर फ्रॉम वन सिंगल कंपनी. 26,000 pieces. 26,000 pieces. That's crazy. That's crazy. That's crazy. So that's how Nykaa and all that has helped me. But along with that, there was also a time जहाँ पे वो monthly boxes and all were there. Yeah. तो So monthly वहाँ- subscription boxes. तो उसमें क्या होता है कि यू आर रीचिंग आउट टू मैनी पीपल, यू नो. वो 500 1000 के बल्क में आपके पास से, ऑफ कोर्स यू डोंट सेल देम एट अ एमआरपी, देयर इज सम फिक्स प्राइस यू सेल देम. बट मेरे लिए वो टाइम पे एक जो बोलते हैं ना कस्टमर का डाटाबेस होना, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट. Yeah, yeah. एंड दैट्स व्हाट आई गॉट फ्रॉम नायका एंड ऑल दैट. So my takeaway from your conversation is somebody who wants to start a business from their house. सबसे पहले उनके पास उनके प्रोडक्ट का फॉर्मुलेशन होना चाहिए, प्रोडक्ट का Absolutely. कॉन्सेप्ट होना चाहिए. Absolutely. सेकेंडली, या तो वो प्रोडक्ट अपना घर पे बना के उसको अप्रूवल के लिए भेज सकते हैं, और दे हैव टू फाइंड अ FDA सर्टिफाइड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट Right. that can make their product. Right. Third, you need to have some kind of validation from the customers, people that are using your product, उन पे वो प्रोडक्ट एक्चुअली काम कर रहा है या नहीं. वेरी ट्रू. फोर्थ, अगर आप एक्चुअली नाउ अगर आपका प्रोडक्ट का वैलिडेशन हो चुका है फ्रॉम योर फर्स्ट सेट ऑफ कस्टमर्स, नाउ इज द टाइम टू गो टू मार्केट. एंड learning from your story, we understand that marketplaces is a good way to start, right? Yes. Maybe guys go to Amazon, go to Nykaa. For us, because we retail in the pet sector, we have platforms like Supertails. These are all giant e-commerce that help you, being an Indian entrepreneur, come on their platform and sell products at a certain specified commission. So again, coming back, Nykaa and e-commerce, every industry e-commerce like this has really boomed and helped smaller entrepreneurs pick their products up, gain that validation from the first set of customers, Right. and just pave the way for the new entrepreneurs that are coming in. Being an entrepreneur, especially being a female entrepreneur, what is the most common thing? People scamming you is the most common thing, right? People taking you for a ride is the most common thing. Absolutely. People underestimating you is the most common thing, and you getting judged by the way you look, by the way you speak is the most common thing. So tell me some of the problems you face, just particularly because you're a women entrepreneur. Some of the scams that you might have gone through, some of the people that might have fooled you. Tell us, shed some light about those incidents. सो ऑफ कोर्स वैसे तो बहुत है, बट अगर विदाउट नेमिंग मेरे पास भी काफी है. काफी है. without naming anybody, if I have to tell you a small experience which I went through in my life was Yeah. when I started this. Of course, you always doubt yourself, Yeah. कि whether I'll be able to do a good business. Or if you have seen the Shark Tank का first promo when they were just coming in, तो हमारे इंडिया में एक है कि आपको ऊपर चढ़ने से पहले ही आपके लोग घर खींचते वाले हैं. लोग खींचते हैं. So for me also it has happened that अरे अभी लॉयरशिप छोड़ के तेल बेचने जाएगी क्या, तो वो मेरे में एक डाउट आ गया था कि यार अब क्या करूँ. दो द वैलिडेशन वाज देयर, आई वाज ऑलवेज लुकिंग फॉर अ नेगेटिव कमेंट्स फ्रॉम माय कस्टमर्स, बिकॉज सो दैट आई कैन वर्क ऑन दैट, बिकॉज आई नो व्हाट ऑल आर द पॉजिटिविटी एंड पॉजिटिव पॉइंट्स.
तो मैंने कंपनी बना ली फिर मुझे लॉयरशिप नहीं छोड़ना था बिकॉज एज अ लॉ यू हैव टू गिव अप योर कार्ड वी गेट अवर लाइसेंस लाइसेंस तो वो देने से पहले मुझे देखना था हाउ आई कैन डू और नॉट तो कंपनी बना ली कंपनी में मैं नहीं थी उसमें मैंने मेरी सिस्टर और एक थे हमारे नोन पर्सन उनको रखा एज अ डायरेक्टर और जो उसमें मैक्सिमम चंक मैंने उनको दिया और मेरी सिस्टर के पास कम रखा बिकॉज यू नीड 2 डायरेक्टर्स इन द कंपनी you mean you gave a certain percentage of your company, मैक्सिमम परसेंट ऑफ द maximum कंपनी percentage टू of the दैट company पर्सन to a person, या और बाकी का जो था वो आपकी बहन के पास बहन था? के पास था Okay. एंड देन वी डिसाइडेड कि विद इन 3 months टाइम वी कैन ऐड यू एज अ एडिशनल डायरेक्टर एंड दैट Right. पॉइंट ऑफ अ टाइम वॉट एवर शेयर्स आर देयर ऑन माई नेम विच Will आई get जस्ट transferred. ट्रांसफर टू यू तो आज तक मैं बस वेट कर रही हूँ कभी तो बेसिकली आपने आपकी जो पहली कंपनी बनाई वो आपकी कंपनी नहीं है ऑन पेपर? ऑन पेपर नहीं ऑन है पेपर दो नहीं है, आई एम देयर एज अ डायरेक्टर बट उसमें मेरे शेयर्स नहीं है शेयर्स नहीं है. सो आई मीन आपने कंपनी बनाई और वो कंपनी में आपके शेयर्स ही नहीं है. सो आई मीन वन ऑफ द बिगेस्ट स्कैम्स आई थिंक आई biggest हैव scam हर्ड. I can say. But again, to it's always good to know a second way. Always be ready with plan A, plan Plan B, B. and plan C. And I was at the almost time of giving up just before the Shark Tank came, and I think Shark Tank gave me a rebirth, you can say, and that's how the story started. What has your mental health been like? Because I am 28 right now, and I deal with a lot of anxiety. I have a small team of people that I work with, and the business Touchwood is doing very good, but I deal with a lot of pressure. Pressure from the investor standpoint, pressures from customer standpoint, pressure from employee standpoint, pressure from family standpoint. Now I'm at the age to get married, so marriage pressure. Correct. And उससे पहले it was college and work. Never ending. Never ending. Never मतलब वो ending. एक के बाद एक के बाद एक, it's always there. So since you have lived more and your life has been slightly more difficult, what mentally, how did you deal with it? Mentally, of course, at one point of a time, I collapsed. And under the stress and all that, I developed PCOD, which we call it as a PCOS or a PCOD. That right. was also one thing. And other than that, I got anxiety. I'm still having it sometimes. So I can't get into a lifts. I can't get into. I almost stopped flying because of the the aircraft and all that. It's close and all that. For years, I used to climb for 18 floor, 20 floors, and all that. This was my mental instability, you can call it. I was going through anxiety and all that. Thanks to my furry baby, who is there in my life, I think he is the one who took away all my this anxiety because you have things to leave. So for me, Yeah. it's like more than me. It was for me कि अगर हम लोग लिफ्ट में हैं तो मुझे उसको देखना is more important. Yeah. So that is one thing. And of course, if you have a confidence in yourself, nobody can touch you. Nothing can true. happen. That's true. And That's I true. think to end to this, I would say that, recently I walked, I did a ramp walk Oh my with God. Abu Jani Sandeep Oh Khosla my God. at the age of 42. That And is so that cool. was amazing. That is so cool. That is Yeah, so cool. How yeah. did that happen? It happened, so we got a chance to showcase our business with Entreprenari, with Aspire for Her and Navya Naveli Nanda's one other thing. So both came together in we got a chance and then they decided कि okay ठीक है जो अबू जानी संदीप खोसला का जो गुलाबो कलेक्शन है वो उन लोगों को ऐसे लॉन्च करना है. So we around 16-17 entrepreneurs got a chance to walk the ramp. That is beautiful. And That is beautiful. the amazing thing was I shared my walk with our Olympian Deepa wow. Karmakar. Wow. Yeah, so that was also one of the best feeling I can say. Lovely, lovely. One line, just to close this, about the Indian startup ecosystem and what are the things that you wish that we could change in the future for younger entrepreneurs, and what are the things that should change for female entrepreneurs, just so that there is a boost of confidence in them. Two things I don't like about women entrepreneurs is किसी को भी stage बनाया हुआ नहीं मिलता है. So you have to get out from your comfort zone. Right. Secondly, nowadays I am seeing that if there is a woman who is helping you out, then I have seen that they don't want to do any sort of a research. कि आपने ये number दिया ये number नहीं काम कर रहा है अभी क्या करूँ. Baba, do. It's because I have done so much. Might be I have spent 8 years. So first of all, because I have spent 8 years,
it is becoming easy for you to reach out to that person. Yeah, So obviously. do little bit of homework, and that is what Girls all. want it easy. Yeah, Do you say don't, that? yeah, don't do that. Just get out from comfort zone. I've seen many women coming from and crying and cribbing for, I'm sorry, but we had nothing when we started. So you have a platform, use it. Yeah. एंड फॉर द सिस्टम के लिए आप कुछ नहीं बोल सकते हो, बिकॉज गवर्नमेंट इज कमिंग एंड गोइंग एंड सिस्टम इज गेटिंग चेंज एवरी टाइम, दिस और दैट. Try to go ahead with whatever smallest to the biggest opportunity you have. Grab it. Just Grab grab it. it. I don't lose any of my opportunity. Right, right. So like start from selling the product at the farmers market, then selling the product at Ahmedabad airport, to 30 stores in Gujarat, to 6 stores in Bombay, Maharashtra. Every smallest to the biggest thing. And I'm one of the person who believes that more than PR, what founder can talk about their brand, nobody else Nobody can. else can. Nobody else can. That's true. And it was an amazing conversation, Krishna. I think we all learned a lot, and I particularly learned way more by spending time with you personally and on camera. And some great feedback that you've given for our startup ecosystem and for women. And what I personally love about you and your journey is that confidence. You have never given up. I mean, the world has tried to shut you down a million times, and Yes. you have always stood your ground and stood up strong and gifted the world a beautiful brand like Mom's Therapy, Thank which I'm you. sure you are going to give me free For samples for sure, later. for sure. Why Yeah. samples? I'm gonna send you whole goodie with Beautiful. everything. So we just want more women to encourage more women. Absolutely. Thank you for being here. It was very emotional and inspiring to hear from you. And I hope you can do amazing work. And I Thank hope we you. can collaborate in future also in some or Thank the you other so way. much. First of all, thank you so much for your time. Thank you so much for introducing me to this new world of podcast. I've done it, but not on camera. So that is wonderful, wonderful. I'm looking forward for more, and I'm looking forward to work with you, collaborate with you. Guys, if you loved our conversation, please hit like, share, and subscribe to learn from amazing entrepreneurs for free.